Uh, Good morning, everyone. So today we're here again with the second topic of the contract law, that is the contract of guarantee. So in the previous class we studied about contract of indemnity. What's contract of indemnity? Who are the parties over there? The indemnifier, the indemnity holder. So please go through that video if you haven't watched. तो आज हम लोग करेंगे contract of guarantee. Contract of guarantee comes under section 126 of the same act, Indian Contract Act 1872. So let's start. Okay, so as it's written that it's a contract, it is a contract to perform the promise or discharge the liability of the third person in case of default. See, contract of guarantee and contract of indemnity is quite a bit similar in some cases, but कभी कभी किसी किसी चीज में थोड़ा थोड़ा changes है. Okay, so those changes you will get to know in the next class, means the third class of this session of this topic, जिसमें हम लोग contract of guarantee and contract of indemnity का difference पढ़ेंगे. So now let's study about the contract of guarantee. So you remembered, right, when we studied contract of indemnity, the diagram was how? So the diagram was like this: A, B, and there was a C over here. So this was the diagram, right? So in the diagram only you will get the difference of contract of indemnity and contract of guarantee. In contract of guarantee, it's like this: there is A, there is a B, and there is a C over here, and he is with both these. Okay, so this is a triangular shaped, so these three are equally liable to one and all, means not liable also, but these three are interrelated to one and all. But here A and B in the indemnity, A and B were the persons in under contract, and C was related to A. C was directly not related to B. But in this case, in the contract of guarantee, here C is related to A, C is related to B, and A is of course related to B. That's why contract of guarantee is known as the tripartite guarantee. Tripartite guarantee. Okay, because this contract of guarantee have three parties in it, and these three parties are related to each other. So this is a tripartite guarantee. It means this guarantee have three parties. Okay, let's name those parties. Okay, as we name now, indemnity holder, indemnifier. So here the name of them will be, so this way: A is the creditor, of course. B over here is the principal debtor. He is not a debtor, he is principal debtor. Why principal debtor? You will get to know. And C is the surety or the guarantee, who gives the guarantee that he will pay. If he falls in default, he will pay. Why principal debtor? Just remember this. You remember in the contract of indemnity, right? That contract of indemnity is non-repayment. Contract of indemnity was not repaid. But guarantee is not like that. Guarantee can be repaid. So why he is principal debtor? Because C, when B falls in default, C paid A on behalf of B. Now C can ask the money back from B. That's why he becomes the principal debtor. He is not only, he is principal debtor. He have a debt to both of them. So when the debt finished in the case of A, he has a debt with C, because he have to repay C, the surety or the guarantor, that he have to pay. That's why he is the principal debtor. This is the main motive why he is not a debtor but the principal debtor. ठीक है.
तो इसको इसलिए प्रिंसिपल लेटर बोला जाता है। सो अभी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के अंदर 3 कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। ओके, देयर आर 3 कॉन्ट्रैक्ट्स अंडर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ गारंटी। वन इज द क्रेडिटर एंड द प्रिंसिपल डेटर। इट्स बिटवीन द क्रेडिटर एंड द प्रिंसिपल डेटर। क्रेडिटर एंड प्रिंसिपल डेटर के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो मेन कॉन्ट्रैक्ट है, दैट इज इट्स नोन एज द प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट। Then second is the between surety and creditor, between surety and the creditor, because he will pay if he falls in default. तो एक कॉन्ट्रैक्ट क्रेडिटर और श्योरिटी के बीच में भी हो गया। एंड द थर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज बिटवीन श्योरिटी एंड द प्रिंसिपल डेटर। श्योरिटी और प्रिंसिपल डेटर के बीच भी एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया। क्यों अगर ये डिफॉल्ट में फंसेगा तो इसको सी विल पे टू ए, तो उसके बाद डेटर प्रिंसिपल डेटर इसको पे करना पड़ेगा। ही कैन आस्क that amount returned back by the debtor, that's why he is the principal debtor. So इधर में भी एक contract बन गया। So there are 3 contracts between these 3 peoples, creditor, surety and principal debtor. And why it's known as tripartite agreement? Because there is 3 parties, a creditor, a principal debtor and a surety, or we can say guarantor. So these are the 3 contracts that consist in the contract of guarantee. Okay, so now coming to the essentials or the major features of contract of guarantee. Firstly, contract of guarantee is in a written form or in oral form. Okay, एक ना वो written में हो सकता है, written form और oral form, ठीक है। This is the one. There should be a principal debtor, should be a principal debt, ठीक है, प्रिंसिपल डेट होना पड़ेगा। हाँ, एंड द प्रिंसिपल डेटर इट्स बेनिफिट टू द प्रिंसिपल डेटर इन सफिशिएंट कंसिडरेशन। देयर शुड बी ए कंसिडरेशन। ओके, उधर में एक कंसिडरेशन होना पड़ेगा दैट शुड बी बेनिफिटेड टू द प्रिंसिपल डेटर। प्रिंसिपल डेटर को बेनिफिटेड होने वाले के लिए एक सफिशिएंट कंसिडरेशन होना पड़ेगा। देन देयर शुड बी कंसेंट ऑफ द श्योरिटी। कंसेंट ऑफ श्योरिटी होना ही पड़ेगा, क्योंकि देखो when this surety will come into a contract between this principal debtor with this principal debtor, then principal debtor have to disclose all the facts, he has to disclose everything with C can't be under any misrepresentation or misstatement, और contract का सब अता पता उसको पता होना पड़ेगा, and that have to be delivered by the principal debtor. Okay, सो तभी सी कॉन्सेंट देगा ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन बाय दिस प्रिंसिपल डेटर। प्रिंसिपल डेटर जो इंफॉर्मेशन देगा सी उसको सुनेगा, सी विल कंसिडर दैट इट इज राइट एंड देन सी कॉन्सेंट विल बी टेकन। अगर प्रिंसिपल डेटर कुछ गलत इंफॉर्मेशन दिया सी को एंड सी आफ्टरवर्ड्स told that I won't pay that money because he have misguided me, then it's not, C will not be liable. Okay, C won't be liable. तो consent of surety चाहिए। consent of surety इस representation के basis पे नहीं होना चाहिए और वो forcefully नहीं होना चाहिए। it should be free consent of the surety। फिर normal हो गया, the contract should be a void contract, of course void contract होना पड़ेगा। okay, that should be a void contract। फिर हो गया आपका, फिर as I told, no concealment of fact, सब फैक्ट को बोलना पड़ेगा, कुछ भी छिपा नहीं सकते। सो these all are the essentials or the major features, not major features, it's come under essentials of the contract of guarantee. These are the essentials. Okay, just note it down, these are the essentials. सो अभी श्योरिटी का कुछ लाइबिलिटीज होता है, लाइबिलिटी ऑफ द श्योरिटी कुछ होता है। सो वी विल लर्न अबाउट दोज आफ्टरवर्ड्स इन द नेक्स्ट वीडियो। सो अभी के लिए ये वीडियो एकदम प्रिसाइज रखते हैं ओनली अबाउट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी? Contract of just quick revision. Contract of guarantee comes under 126. It says that there is 3 parties in contract of guarantee, and that's why it's known as the tripartite. That's why it's known as tripartite agreement. Okay, tripartite agreement इसलिए बोला जाता है इसको क्योंकि उधर में 3
तीन पार्टीज होते हैं, A, B and C, that is the principal debtor, creditor and the surety or guarantor. Then the essentials, that it should be written or oral, there should be a principal debt, एक principal debt होना पड़ेगा, फिर principal debt, देन कंसिडरेशन होना पड़ेगा, कंसिडरेशन आपको चाहिए ही, ठीक है, फिर कंसेंट ऑफ सियोरिटी होना पड़ेगा, सियोरिटी का कंसेंट होना पड़ेगा, गारंटर का कंसेंट होना पड़ेगा, एंड इट शुड बी अ फ्री कंसेंट, और वो कंसेंट देगा ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट्स दैट आर बीन डिस्क्लोज्ड बाय प्रिंसिपल डेटर. ओके, देन इट्स अ वॉइड एग्रीमेंट, एग्रीमेंट होने से तो वॉइड ही होगा. वॉइड एग्रीमेंट के लिए किया गया था, वी रिमेंबर्ड सेक्शन 2A proposal and offer, section 2 clause B acceptance, section 2 clause C हो गया आपका प्रॉमिस, सेक्शन 2 क्लॉज डी हो गया आपका कंसिडरेशन, फिर हो गया आपका एग्रीमेंट, एंड इन दैट वे एनफोर्स बाय लॉ, देन कम्स कॉन्ट्रैक्ट. ओके, सो ऐसे जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो चाहिए वो होना पड़ेगा. ओ सॉरी, इट मस्ट नॉट बी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, नॉट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, आई एम सो सॉरी, इट्स नॉट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, इट्स वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. ओके, एसेंशियल्स में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ेगा. आई एम सो सॉरी, इट्स वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, देयर शुड द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी वैलिड एंड नो कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट. फैक्ट का कोई लुका छिपी नहीं कर सकता है, ठीक है. तो हो गया वो. फिर हम लोग पढ़े थे देयर आर 3 कॉन्ट्रैक्ट्स, 3 कॉन्ट्रैक्ट्स होता है. 3 कॉन्ट्रैक्ट्स क्या क्या होता था, एक हो गया कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द क्रेडिटर एंड द डेटर, एक इधर में कॉन्ट्रैक्ट हो गया, दिस इज द प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट. सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट हो गया श्योरिटी एंड क्रेडिटर के बीच, एक दिस इज द सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट, एंड द थर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज बिटवीन श्योरिटी एंड द प्रिंसिपल डेटर. ये डायग्राम आपको याद रख लेना चाहिए, ये डायग्राम से ही आपका सब निकल रहा है. ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट क्यों है, क्योंकि इसमें 3 पार्टीज है. 3 कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है, क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर के बीच, क्रेडिटर और श्योरिटी के बीच, श्योरिटी और प्रिंसिपल डेटर के बीच. तो इट्स अ ट्राइंगल, राइट. सो ये डायग्राम से ही आपको सब पता चल रहा है कि मतलब बहुत क्वेश्चंस निकल के आएगा आपको, ठीक है. श्योरिटी को श्योरिटी भी बोला जाता है और गारंटर भी बोला जाता है, क्योंकि ही गारंटीज दैट ही विल पे, ठीक है. सो दीज आर ऑल अबाउट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी. इफ एनी क्वेश्चन जस्ट कमेंट डाउन. वन स्मॉल पॉइंट इज देयर दैट काइंड्स ऑफ गारंटी, गारंटी का सिर्फ 2 काइंड्स होता है, ठीक है. एक हो गया स्पेसिफिक गारंटी एंड एक हो गया कंटिन्यूइंग गारंटी. स्पेसिफिक गारंटी मतलब दैट्स फॉर अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ ट्रांजेक्शन, ठीक है. पे कर दिया, खत्म हो गया, गारंटी उधर में ही खत्म. कंटिन्यूइंग गारंटी इज नॉट स्पेसिफिक, इट्स लाइक इट्स गोइंग ऑन, इट्स फॉर अ लॉन्गर ट्रांजेक्शंस. ओके, सो कंटिन्यूइंग गारंटी एक लॉन्गर ट्रांजेक्शन के लिए होता है, कंटिन्यूइंग होता है वो, मतलब एक लीज, अगर कुछ चीज़ लीज में लिया तो उसको 10 ईयर्स के लिए उसका लीज, वो चीज़ को लीज में ले लिया, ठीक है. तो अभी फिर रिन्यू करना पड़ेगा, या दैट्स इट्स कंटिन्यूइंग एवरी ईयर फॉर 10 ईयर्स. बट स्पेसिफिक गारंटी आर गारंटीज व्हिच आर फॉर अ स्पेसिफिक टाइम. सो दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ गारंटी. तो चलो नेक्स्ट क्लास में वी विल लर्न अबाउट लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी एंड लायबिलिटी ऑफ को श्योरिटी. को श्योरिटी बोल के भी एक टर्म है, 1 मिनट लगेगा इसको समझाने में. तो को श्योरिटी के बारे में देख लेंगे और श्योरिटी के लायबिलिटीज के बारे में देख लेंगे. और द मेन इज दिस, द डिस्टिंक्शन बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी. बहुत माइनर डिफरेंसेस है, तो उस डिफरेंसेस को पॉइंट आउट करने के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है. तो दिस will help you to know more about the differences between the contract of indemnity and contract of guarantee. So we'll learn about these things in the next class. Subscribe to Per Law. Bye.